बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम 2 डायमेंशनल एनालिसिस या 2D से है। डिफाइन डायरेक्टर सर्किल एंड फाइंड इक्वेशन फॉर इट। तो हमें डायरेक्टर सर्किल की डेफिनेशन देनी है जो आपको कहीं से भी मिल सकती है, और उसके बाद उसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है, ड्राइव करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने पहले से लिख रखी है डायरेक्शन सर्किल की डेफिनेशन। इफ़ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, यानी उन पॉइंट्स का बिंदु पथ, यानी यहाँ से वो पॉइंट चलता है। कौन सा पॉइंट? जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ पेयर, यानी दो पेयर का, और वो पेयर कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टेंजेंट के टू ए कॉनिक, यानी किसी कॉनिक के जो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होते हैं उनका इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो पॉइंट, और वो पॉइंट कैसा होना चाहिए? वो सर्किल अगर है दैन द सर्किल कहलाता है डायरेक्टर सर्किल कहलाता है। इसको हम थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो इस तरीके से कि एक ये माना कि कॉनिक है। कॉनिक का आपको मालूम है कि सर्किल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला हाइपरबोला भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एक रफली एक इलिप्स बनाया है, और इस इलिप्स पर अगर दो टेंजेंट ले लें, क्योंकि हमें लोकस फाइंड करना है टेंजेंट का। वो भी टेंजेंट कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टेंजेंट होनी चाहिए। तो एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी, दूसरी इस पर एक परपेंडिकुलर टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी, दोनों 90 डिग्री कट करती है। इससे हमें एक पॉइंट मिला। ऐसे ही बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पेयर में, जो कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और उन सभी पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो एक सर्किल मिलेगा। उसी सर्किल को डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। कुछ तो हम दिखा सकते हैं, जैसे इसी टेंजेंट को और आगे बढ़ा दें और एक और टेंजेंट इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। एक टेंजेंट है तो यहाँ से एक पॉइंट और मिल गया हमको, और हम और भी हैं इसी तरीके से, या तो इस पर टेंजेंट ले लें या इस पर ले लें। तो इन पॉइंट्स यहाँ पर टेंजेंट ले ली, ये कट कर रही है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है, जैसे कि यहाँ बना रही थी, वहाँ बना रही थी। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमको मिले हैं जो कि 90 डिग्री पर कट करते हैं और इस पर टच करते हुए जाते हैं, यानी टेंजेंट हैं। तो इन पॉइंट्स को, इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो एक जो सर्किल मिलेगा, उसी सर्किल को हम डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। तो अब हमें इस सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना होगा, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो कॉनिक्स के जो टेंजेंट होते हैं उन पर लाई करते हैं। ये पॉइंट इंटरसेक्शन पर लाई करते हैं, और किसी भी कॉनिक जिसके इक्वेशन को हम s=0 से डिनोट करें और इस पॉइंट को x1 y1 से डिनोट करें, टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन हम लोगों को निकालने का फार्मूला आता है। इसका S1 = t², ये फार्मूला होता है। इसको हम अभी डिटेल में भी लिखेंगे। यहाँ पर S1 का मतलब होगा, आप इस इक्वेशन में जहाँ पर भी x मिलेगा x1, y मिलेगा y1 रख के S1 = 0 भी निकाल लेंगे। और t का मतलब टेंजेंट होता है। टेंजेंट कैसे निकलेगा वो भी बता देंगे। सबसे पहले तो हम इसका यानी डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम लिख देते हैं, मान लेते हैं कि जो कॉनिक गिवन कॉनिक्स है, लेट द इक्वेशन ऑफ कॉनिक, जिसको हम लोग s=0 लिखते हैं। और आपको मालूम ही है कि जो s होता है वो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक मीन्स x² प्लस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री x²
प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस सी होता है s की वैल्यू। अब हम इससे इसमें से पहले कि हम एस डैश निकालें, बता दें कि एक पॉइंट हम लेंगे x1/1, तो उसी को हम लिखना चाह रहे हैं। द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट x1/1 ले लेते हैं। तो इस इक्वेशन से दिया जाता है द पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन, जैसे हमने पहले बताया कि इस फार्मूले से दिया जाता है SS1 = t²। यहाँ s जो कि ये वैल्यू होती है, जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता है, ax² प्लस का 2h एक्स वाई प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। और यहाँ पर S1 का मतलब जहाँ पर भी आपको इस इक्वेशन में यानी S की वैल्यू में नज़र आ जाए x, वहाँ पर x1 रख देंगे, y मिलेगा y1 रख देंगे, तो इसी वैल्यू में रख देते हैं। तो मिलेगा ax1² प्लस का 2h x1y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस का c इजिकल टू, फिर उसके बाद t है। t कैसे निकालें, जैसे कि हमने कहा था, अभी बाद में देख लेंगे इसको। तो t का मतलब टेंजेंट्स होता है, और t निकालने का तरीका ये होता है कि जहाँ पर भी आपको इक्वेशन में x² नज़र आए वहाँ पर x1 x पुट कर देंगे, जहाँ y² नज़र आए वहाँ पर y1 y पुट कर देंगे, जहाँ पर x या 2x नज़र आए, अगर 2x नज़र आएगा तो आप x प्लस x1 रख देंगे, और माना कि x की जगह पुट करना चाहें तो x प्लस x1/2 कर देंगे, यानी ये दोनों एक ही बात है। ऐसे ही 2y की जगह पर रख सकते हैं, y प्लस y1 रख दें आ जाएगा। तो सारे ये हो चुके हैं, इन वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें t मिल जाएगा। तो t यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ही देखेंगे, जैसे ये भी बताया था x² की जगह पर क्या रखना है, तो t की यहाँ पर ये लिखा रहने दें, x² की x1 x रखना होता है, ये t है, t² करना होगा हमें। फिर प्लस है 2h है, ये रह गया था टर्म। तो यहाँ पर हम एक्स वाई की जगह पर रख देते हैं x1y प्लस xy1/2, यानी 2 को अगर इधर इंटू कर दें तो 2xy की जगह रख देंगे हम x1y प्लस xy1, ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पर h को लिखा रहने दें, और 2xy की जगह पर हम अभी जैसा कि लिखा था x1y प्लस का xy1, ये पुट कर देंगे। उसके बाद y² जहाँ पर नज़र आ रहा है, y² की जगह पर y1 y पुट कर देंगे, और यहाँ पर 2x है प्लस g को तो लिख लेंगे ऐसे ही, और 2x की जगह पर x प्लस x1, या फिर हम कह सकते हैं x की जगह पर x प्लस x1/2 पुट कर देंगे। तो g तो लिख लिया, और 2x के प्लेस पर हम 2x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1 से, प्लस आल्सो we replace 2y y प्लस y1 प्लस we write c as एंड, और इसका होल अप स्क्वायर कर दिया जाएगा यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सॉरी ओनली होल अप स्क्वायर ऑफ t, यहाँ पर सिर्फ t का स्क्वायर करेंगे। अब जैसे कि डेफिनेशन थी डायरेक्टर सर्किल की, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन सर्किल, ये इंटरसेक्शन है पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, ये अभी जो आया है इसको हमें बनाना है परपेंडिकुलर, वी हैव टू कन्वर्ट दिस परपेंडिकुलर टेंजेंट। फॉर दिस you know that
second equation, general equation of second degree, represent two tangent and perpendicular tangent, then the coefficient of x square and y square, sum of coefficient of x square and y square must be 0. So we put the coefficient of sum of the coefficients of x square and y square equal to 0. Then we find the required equation of director circle. So we have to find coefficient of x square and y square. When this value, you should consider this value as a whole, a number, and multiply at this number, this term, we get coefficient of x square, which is equal to a and this. So I will do after writing it. If these two tangents, because we get these are two tangent from x dash y dash on the given conic. If these tangents are at right angles, then the sum of the coefficient of x square and y square will be 0, because we know that if this equation of second degree, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, this equation of second degree represents two lines, then and perpendicular line, two perpendicular line, then a plus b is equal to 0 or perpendicular, two perpendicular line. This is if this is pair of two perpendicular line, then coefficient of x square and y square, sum of coefficient of x square and y square must be 0. So I put the coefficient of x, sum of coefficient of x square and y square equal to 0. So we have to find the coefficient of x square, which is when multiply this value in this term, we get a x1 square plus 2h x1 y1 plus v y1 square plus 2g x1 plus 2f y1 plus c, and plus when we multiply this, we consider this a number, as a number. When multiplied to in this term, we get the coefficient of y square v, and multiply this whole values v, and ax1 square plus 2h x1 y1 plus b y1 square plus 2g x1 plus 2f y1 plus c. It is only two terms of x square and y square on the left hand side. On right hand side, we have to find coefficient of x square and y square. If you take this value to left hand side, we have, then we put sum of the coefficient of x square and y square
to 0. What if we not transpose this term on the left hand side, we write it as then we have to equate the coefficient of x square and y square on the left hand side and right hand side. So I do this. Now we have to find the coefficient of x square and y square on the right hand side, and I will write here. For separating coefficient of x square and y square on the right hand side, first we write this value as we have take x common from these terms 1, 2 and 3. In the same way we take y, so I write on rough then we get coefficient of x. If we take x, we get ax1. In this term, on opening bracket, h multiplied to this term, and coefficient of x become h by 1 plus h y1, and also we get the coefficient of x when small g multiply to this term, and we get coefficient of x equal to g. This is coefficient of x. I separate the x term. Similarly, I am taking y common to 3 terms in this term. This is have y also in this term. We have y also in this term. From these 3 terms, we take out y as a common. We get hx1 plus by1 plus f plus we get other terms also. Papa. We get also other terms also, which are constant term. These terms are also written. We know left term gx1 I write in numeric which is constant term, fy1 plus c, fy1 plus c, and all of us like this, because t square, which is t square, this value is t, and we have to whole of square it. We know that formula of a plus b plus c whole of square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. What we have not need to squaring whole and squaring this and get whole terms. We have to only 2 terms in which x and y present, because when we square this term and this term, we get x square and y square. Only we want to coefficient of x square and y square. So this gives by these 2 terms. Here this value is a, and this value is b, and this value is c. On squaring by this formula, we get ax1 plus hy1 plus g x whole of square plus this square hx1 plus b by 1 plus f y whole of square, and other on
other terms, we get not the coefficient of x square y square. These are only two terms by which we get the coefficient of x square and y square, and coefficient of x square is clearly this and coefficient of y square is this. So I write this value on fair work. So I write the coefficient of x square here, which is ax1 hy1 ax1 plus hy1 plus g whole square plus now I write the coefficient of y square, which is hx1 plus b y1 plus f whole square. This so we get by this the locus of point x1 y1, which is nothing but equation of director's circle. So the equation of director circle we get it by replacing x1 by x and y1 by y. x1 I write x1 replace x1 by x and y1 replace by y in this equation, last equation. And also we are seeing that this value is common in these two terms. So I take out it and we get a and plus b here, and this value is common, and put the value of put x1 and y1 x square plus 2h xy plus v y square 2gx plus 2fy plus c, because we have to find the locus of points to get the equation of director's circle. Left hand side is complete, and also on right hand side we get ax plus by plus g whole square plus hx plus vy plus f whole square, which is required equation of director circle. Thank you very much indeed for listening me. Wa akhru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.